बैनर। नमस्कार। आज शनिवार है, शाम के 5 बजे हैं और डेल्फिक डायलॉग के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। डेल्फिक डायलॉग का आज का ये सत्र बहुत विशेष है, महत्वपूर्ण है और वो इसलिए कि आज डेल्फिक डायलॉग को पूरे 25वें एपिसोड होने जा रहे हैं। यानी हमारा डेल्फिक डायलॉग्स का रजत जयंती, यानी हमारा जो सिल्वर जो हम करते हैं उसको बहुत आज अच्छे से बनाए जाने की सोची थी। और आज इस विशेष प्रोग्राम सिल्वर जुबली के विशेष प्रोग्राम को मनाने के लिए, इसको सेलिब्रेट करने जैसा कुछ देने के लिए एक विशेष कार्यक्रम रखा गया है। आज से पहले जितने आपने कार्यक्रम देखे उसमें हमने संगीत, नृत्य या साहित्य के किसी न किसी विषय को लेकर ये प्रोग्राम को हम आपके सामने लाए। लेकिन आज हम एक ऐसे विषय को लेकर आए हैं जो जनरली हमारी आंखों से सामने होते भी ओझल होता है। वो है एनवायरनमेंट का विषय, यानी पर्यावरण का, इकोलॉजी का यानी पारिस्थितिकी का विषय। और उस पर एक आपको एक डॉक्यूमेंट्री जो बहुत ही अच्छे एक्सपेरिमेंट जयपुर में किया गया उस पर बनाई गई दिखाई जाएगी। और उस डॉक्यूमेंट्री का नाम है रीवाइल्डिंग द अर्बन लैंडस्केप। इस डॉक्यूमेंट्री को बनवाने में जिनका महत्वपूर्ण योगदान रहा, हमारी डेल्फिक काउंसिल ऑफ राजस्थान की प्रेसिडेंट श्रेया मैडम आज हमारे साथ विशेष रूप से आमंत्रित की गई हैं। हमने उनसे निवेदन किया कि आज ये 25वां एपिसोड है, तो कृपया आप आज हमारे साथ पधारें। और चूंकि ये फिल्म बनवाने का आइडिया भी डेल्फिक की तरफ से उनके माध्यम से पर्यावरण विभाग को गया था, तो आज हम उनको उनका स्वागत करते हुए बड़ा ही गर्व महसूस कर रहे हैं। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है और वेलकम। और ये जो पर्यावरण का विषय डेल्फिक का एक बहुत इम्पोर्टेंट विषय है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि डेल्फिक गेम्स ओलंपिक गेम्स जितने ही पुराने हैं और किसी जमाने में ओलंपिक गेम्स और डेल्फिक गेम्स लगातार होते रहते थे। हर 2 साल के ओलंपिक गेम्स के 2 साल के बाद डेल्फिक गेम्स हुआ करते थे। गेम्स का जो पुराना ट्रेडिशनल अर्थ था एक्टिविटीज, लेकिन बाद में इसको ये मान लिया गया कि जो भी फिजिकल एक्टिविटीज होंगी, जो खेलकूद होंगे, वो हमारे ओलंपिक से जुड़ेंगे। और जो बाद में जो अदर एक्टिविटीज होती हैं डेल्फिक की, उसमें अभी के हालात को देखें तो 6 आइटम होते हैं, जिसमें एक इकोलॉजी और एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा भाग है। और जो हमारी डॉक्यूमेंट्री का जो आपने नाम देखा होगा, रिवाइल्डिंग द अर्बन लैंडस्केप, बड़ा अजीब सा नाम लग रहा होगा कि वापस जंगल बना देना, वापस उसको वाइल्ड बना देना। बेसिकली हमारे आज के सभ्यता के इस विकास के दौर में जिस तरह से सीमेंट और कंक्रीट के जो बड़ी बड़ी इमारतें बनी है, उसके लिए एक शेर याद आता है, अ, मेरे हिस्से का सूरज छुपा लेगा वो, मेरे हिस्से का सूरज छुपा लेगा वो, इतनी ऊंची इमारत बना लेगा वो। तो इतनी बड़ी बड़ी इमारतों के बीच में जो हमारे नेचुरल प्राकृतिक जो एनवायरनमेंट है, जो रेत के धोरे जिसके लिए राजस्थान मशहूर था, वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। और जयपुर में जो लोगों को जानकारी जिनको नहीं है उनको बताते हैं, गलता जी से लेके पूरा नाहरगढ़ तक रेत के इतने समृद्ध दौरे हुआ करते हैं, जिनकी देखभाल के बिना, जिनके इकोलॉजिकल कॉन्शियसनेस की कमी की वजह से उनका देखभाल नहीं किया गया था। लेकिन प्रदीप किशन एक ऐसे जो एक्सपर्ट हैं जिन्होंने जोधपुर में भी इस तरह का एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने जेडीए को एक प्रस्ताव रखा कि हम इस अर्बन ये पूरे के बीच में जो ये धोरे हैं जो उपेक्षित से हैं, क्यों नहीं हम इनको इसी उन्हीं के पर्यावरण में, उन्हीं के जो वातावरण है बीच में, इनको वापस इसको अच्छे से डेवलप किया जाए, ताकि लोगों को भी इसकी जानकारी मिले। इस पूरे प्रोजेक्ट को जेडीए ने अप्रूव किया और उनके जो साथी हैं प्रदीप किशन जी के, विजय धसमाना जी और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो समन्वय में रहते हुए ये कार्यक्रम बहुत अच्छे से प्रोजेक्ट संपन्न हो गया। और आज वहाँ पे पूरे 65 हेक्टर में लगभग 11 करोड़ खर्च करके इतना बढ़िया पार्क जैसे डेवलप हो चुका है, जहाँ पल पल पे आपको उसको जानकारी मिलेगी कि यहाँ कौन सी वनस्पति उगती है, यहाँ कौन से जीव जंतु रहते हैं। तो आज उसकी जानकारी देने के लिए हम एक छोटी सी फिल्म आपके सामने हम दिखाएंगे, जो लगभग 30-32 मिनट की होगी।
और इस फिल्म की जो प्रेरणा रही है श्रेया मैडम, जो कि राजस्थान की बहुत वरिष्ठ आईएएस अधिकारी भी हैं, और हमारी खुशनसीबी है कि वो डेल्फिक काउंसिल ऑफ राजस्थान की प्रेसिडेंट भी है, फाउंडर प्रेसिडेंट भी है, और बहुत बड़ा जिसे कहते हैं ना एक तरह से एक गाइडिंग फोर्स है पूरे डीसीआर के लिए। मैडम, आपका एक बार पुनः स्वागत है। और दो तीन सवाल मैं आपसे जी दो तीन सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, उसके बाद हम चाहेंगे कि फिल्म दिखाएं, उसके बाद फिर पुनः बातचीत होगी। मैम, आप डीसीआर का जिस जोश खरोश और मेहनत से आप डीसीआर को पनपाने में लगी हुई है, उसमें लोग सभी जान रहे हैं कि बहुत मेहनत से आप कर रहे हैं, और आप जो भी काम करते हैं सरकार में भी बहुत अच्छे मेहनत से करती हैं, और जो इधर आप कर रहे हैं वो भी काफी दिल लगा के और लोगों को साथ लेके कर रहे हैं। तो लोग ये जानना चाहते हैं कि जो डेल्फिक मूवमेंट का इकोलॉजी और एनवायरनमेंट से क्या संबंध है, प्लीज थोड़ा सा। सबसे पहले तो थैंक यू। और मुझे आज बहुत ही गर्व हो रहा है कि डेल्फिक डायलॉग्स के लिए 25वें एपिसोड में 25th एपिसोड जो हमारा एक माइलस्टोन है, उसमें हम इस तरह का एक प्रेजेंटेशन आज कर रहे हैं, और मुझे मौका मिला है इस फिल्म को इंट्रोड्यूस करने का, जो ऐसे विषय से जुड़ा हुआ है जो बात किया है। एक तो कॉन्जर्वेशन ऑफ नेचुरल हेरिटेज, और दूसरा जो ये विशेष तौर पे किशन बाग का प्रोजेक्ट है। जो आपने सवाल पूछा वो मैं सभी को स्पष्ट करना चाहूंगी कि जैसे मूवमेंट के तहत छह आर्ट फॉर्म्स को प्रमोट किया जाता है विशेष तौर पे, और उन छह आर्ट फॉर्म्स में इकोलॉजिकल आर्ट भी एक उसका हिस्सा है। तो क्योंकि हम नेचुरल हेरिटेज का कॉन्जर्वेशन, उसको संभालना, उसके बारे में प्रचार प्रसार करना, वो भी हमारे मैंडेट में है, तो इसलिए हमने इस तरह के प्रोग्राम भी हमारे डेल्फिक डायलॉग में जोड़े हुए हैं। खास तौर पे आज का जो एक माहौल है पूरे विश्व में, क्लाइमेट चेंज से हम जूझ रहे हैं विश्व के हर कोने में, तो ये इस तरह का एक डिस्कोर्स, इस तरह का एक डिस्कशन होना बहुत जरूरी है कि हम किस तरह से खास तौर पे अपने अर्बन एरियाज में, क्योंकि अर्बन एरियाज एक्सपैंड कर रहे हैं, जो भी आपने कहा कि हमारे जो पेरिफेरल का एरिया होता है शहरों का, उससे हम अब एनक्रोच कर रहे हैं। तो किस तरह से अर्बनाइजेशन के साथ साथ कंजर्वेशन की भी बात हो, और ये जो रिवाइल्डिंग का कॉन्सेप्ट है ये आजकल बहुत जगह जगह पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, तो इसमें कहाँ तक हम जा सकते हैं। और मेरा जो एक विशेष रुचि मेरी रहती है कि किस तरह से जो यंग माइंड को इग्नाइट करना, कि हम हमारा धरोहर किसके लिए बचा रहे हैं हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए। तो उनमें हम ये एक जागृत कर पाए कि इसका संरक्षण करना जरूरी है और इसकी अहमियत क्या है। तो ये हमारा इंटेंशन है, जी मैम। और इसी इंटेंशन से ये इस तरह को जोड़ना चाहिए। जी मैम, इस जो किशन जो अर्बन लैंडस्केप है, इसको हमने किशन बाग का नाम दिया था, और किशन बाग के नाम से पहचाना जाता है, जिसको प्रदीप किशन जी ने और विजय दसमाने जी ने बहुत अच्छे ढंग से इसको तैयार किया। तो ये जो किशन बाग जो एक्सपेरिमेंट, हालांकि इस फिल्म के अंदर अरिजीत बनर्जी साहब जो कि एडिशनल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट वो बता ही देंगे, लेकिन मैं आपसे भी ब्रीफ में ये जानना चाह रहा हूँ कि किशन बाग एक्सपेरिमेंट में ऐसा क्या खास बात है जिसकी वजह से आपका ध्यान गया कि ये चीजें यंग जनरेशन तक पहुंचनी चाहिए। किशन बाग मैं पिछले 2-3 सालों से देख रही हूँ, उसका विकास हो रहा है, और हर बार मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसा जम है, जैसे जयपुर के इतने टूरिस्ट अट्रैक्शन हैं जहाँ लोग आमतौर पर आते हैं, पर ये एक ऐसी चीज विकसित हुई है जो लोगों को, खासतौर पे बच्चों को दिखाना बहुत जरूरी है। और शायद हम इसका जितना प्रचार प्रसार हम कर सकते थे हम कर नहीं पाए, या लोगों को वहां तक हम ले नहीं जा पाए। तो ये सोच के हमने चर्चा की, और जैसे प्रदीप किशन जी, आपने अभी कहा, प्रदीप किशन जी ने कंसीव किया है इस एक्सपेरिमेंट को, इस प्रोजेक्ट को, और जोधपुर में भी बहुत सफल उनका रहा। तो मैं ये सोचती थी कि जो ये
आइकन है, हमारे इतने जाने माने नेचुरलिस्ट हैं, और उन्होंने अगर इसको बनाया है तो क्यों नहीं लोग इसको देखना चाहेंगे, या जो लोग रिवाइल्डिंग में रुचि रखते हैं वो क्यों नहीं देखना चाहेंगे। तो मुझे लगा कि शायद हम लोगों तक मैसेज बहुत रोचक तरीके से नहीं पहुंचा पाए हैं, तो इसकी आवश्यकता है। तो मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के और एनवायरमेंट डिपार्टमेंट के ऑफिसर से मैंने चर्चा की, जो जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी जिसकी ये प्रॉपर्टी है उनसे मैंने चर्चा की, और फिर हमने हम फिल्म इस तरह से एक बनाए जो एक वॉक थ्रू की तरह हो, ताकि हम दर्शकों को पूरा एक पूरे कॉम्प्लेक्स को दिखा पाए, और पूरे कॉम्प्लेक्स में क्या विशेषताएं है वो जो पार्क डायरेक्टर है विजय धसमना जी, उनके शब्दों से ही हम उस लोगों को समझाएं। जी। मेरा अगला सवाल यही होगा, उद्देश्य इसका बनाने का क्या है, लेकिन आपने इसको जवाब दे दिया। दर्शकों तक ये बात पहुंच भी गई कि जो एक विशेष तरह का जो हमने एक्सपेरिमेंट यहाँ किया, जो प्रदीप किशन जी ने जोधपुर में किया था, और यहाँ उनके जो पूरी टीम जिसमें विजय धसमाना जी आज के पार्क डायरेक्टर हैं, उन्होंने मिलकर जो उसको परिस्थिति को, इकोलॉजी को जो मेंटेन करते हुए, प्रिजर्व करते हुए जो एक नई चीज डेवलप करी है, वो लोगों तक पहुंचे, ये उसका मेन उद्देश्य रहा है, ऐसा मुझे समझ में आया। और मैं ये समझता हूँ कि इस फिल्म के माध्यम से हम जनता तक, आम लोगों तक ये बात पहुंचा पाएंगे कि इकोलॉजी का क्या इम्पोर्टेंस है, और अगर इकोलॉजी के जो तंत्र हम अगर विकसित करते हैं तो वो हमारे लिए भी अच्छे हैं, और पूरे इकोलॉजी, पूरे एनवायरनमेंट दोनों के लिए बहुत अच्छे हैं। तो मैं समझता हूँ वो समय आ गया है कि हम इस पिक्चर को लोगों के सामने पेश करें। इस पिक्चर की समाप्ति के बाद हम वापिस से एक बार आपसे जुड़ेंगे, और आपसे एक दो जो भी हमारे। जी मिनट और मैम, चाहूंगी कि प्लीज प्लीज मैम। तौर पे मैं विद्यालय की तरफ से और हम सभी की तरफ से धन्यवाद देना चाहूंगी कि विजय दर्शना जी ने वो गुड़गांव से आए और यहाँ आके उन्होंने हमसे ये फिल्म रिकॉर्ड करने में हमारी मदद की। बहुत जी अच्छा मैम। प्रोजेक्ट इनका गुड़गांव में अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क का है, जिसको हाल ही में ओईसीएम का दर्जा दिया गया है, फर्स्ट ओईसीएम इन द कंट्री, तो उसके लिए उनको बधाई दी है। और ये कि कमिश्नर साहब गौरव गोयल का भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने हमको परमिशन दी कि हमने इस फिल्मिंग को हम इतने अच्छे तरीके से करा पाए हैं। और खास तौर पे जो हमारे बहुत सीनियर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के अधिकारी हैं अरिजीत बानेरजी जी, उनसे मेरी पिछले हफ्ते इस बारे में चर्चा हुई थी कि क्या कर सकते हैं, और इतने जल्द एक हफ्ते के अंदर इसको आपने भी साथ दिया, सबने साथ दिया है, इसको हमने क्यूरेट करके कंसीव करके इसकी फिल्मिंग भी कर दी, तो उसका बहुत बड़ा श्रेय बैनर्जी साहब को जाता है। और खास तौर पे जो हमारी दर्शक की टीम है जिसने इसका पूरा आइडिया सोचा और बनाया, और हमारे जो मेंबर हैं नवीन त्रिपाठी जी जिन्होंने इसको पूरा फिल्मिंग का काम किया है, तो उनको भी बहुत श्रेय जाता है। तो ये बिल्कुल बंजर उजाड़ जमीन को एक इतना सुंदर, एक क्या कहूँ मैं, ज्वेल कह सकती हूँ, उस तरह से इसको बनाया गया है जो आपको फिल्म में दिखाई देगा। उसके लिए जितने लोग इससे जुड़े हुए हैं सभी को बधाई, और सभी को बहुत बहुत जी जी मैम। मैं जो फिल्म शुरू हो उससे पहले मैं सभी जिनका योगदान रहा है इसमें, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रदीप किशन साहब, विजय दसमाना जी, और सबसे बड़ी बात अरिजीत बनर्जी जी, जिन्होंने कि पूरे, मैडम ने जो टाइम लाइन फिक्स करी उससे भी पहले बना कर दे दिया। और अब मैं निवेदन करूंगा कि जो इस फिल्म को दिखाया जाए, फिल्म के बाद हम फिर हाजिर होंगे। किसी के सवाल हो तो बहुत। कृपया कमेंट में डाल दें। तब आप एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट ना भूलें, क्योंकि एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट ने ही ये पूरे फिल्म को बनाया है, स्पॉन्सर किया है। और एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट का जो ध्येय है कि जी एडवोकेसी करना, प्रचार प्रसार करना, उसमें ये एक बहुत बड़ा कदम है उनके लिए, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। डिपार्टमेंट ने भी पहली बार इस तरह का एक्सपेरिमेंट किया है, तो बहुत बड़ा उनको भी। बहुत बहुत बधाई पर्यावरण विभाग को, और साथ में उन सभी अधिकारियों को जिन्होंने इसमें सहयोग दिया। फिल्म शुरू की जाए।
So on a very pleasant and sunny morning, today we are in Kishan Bagh in Jaipur, also known as the sand dunes of Jaipur. A part of a former park as we know it, redone, recreated over the last 5 years. I have with me Mr. Vijay Dhasmana, who is instrumental in many parts in the recreation of this experience, something unique, something new. Vijay, good morning. We are here in Kishan Bagh, and it would be nice if you guide us through how was it done, what was the thoughts behind it, and what more could we do to similar places, not only northwestern India, but rest of the country. Welcome to Kishan Bagh. Thank you. Vijay, how did Kishan Bagh happen? I mean, there was a thought behind it, there was a philosophy behind it. You just walk us through that. Yeah, it's an interesting journey. You know, I got to know through Pradeep because Pradeep was the lead in this project, and I think looking at Raujoda Park, somebody came to him, reached out to him that why don't you do something in Jaipur? And many of the municipal gardens were shown to Pradeep. And he kind of told them politely that this is not what I do. You know, I work on restoring landscapes. So then by end of the day, they kind of realized what he is talking about. So they brought him to this landscape, which was a sand dune, many sand dunes here, but degraded, pretty degraded here. And he got very excited about it. And then he conveyed it to us that, we have got this opportunity to do this restoration work. And so that was the origin of Kishan Bagh. And we made a proposal, showed it to the minister, to the chief minister, that this is what we tried to do. We are trying to restore this vegetation of the sand dunes, which is possible in this particular landscape, and also to create a place for people to kind of understand ecology of this place. So that was the origin of this idea. And we hadn't done before this any sand dune restoration work. We had done, like Pradeep had worked in Raujoda Park, which is rocky, rhyolite and sandstone work, and I had worked on Aravali Biodiversity Park, which was again quartzite, mostly quartzite hills that were being restored. And we had this idea that we want to bring in the plant community from the Thar desert, which are kind of moving out. The whole landscape of Thar is changing, very rapidly. And so we wanted to conserve and kind of show in this little place that we have here. Very colonial legacy is a municipal garden. It has to be laid out, flower beds, lawns, bougainvillea. And the very moment we say a park, that's what people appreciate. So to move away from that into the concept of landscape and its conservation, conserving the skyline, if you call it so. So Kishan Bagh is actually now extremely popular among youngsters, and the quality of interpretation is always very important when it comes to appreciating nature. So shall we take a walk through the park? And of course, pleasure. This is, by the way, all the infrastructure that you're seeing is done by somebody called Golak, who was part of the team. We have 4 people. Pradeep was the lead. Then there was an architect, landscape architect, Harpreet. And then architect Golak, who has this Teda Meda Balli ideas that he employed, and me. So, municipal parks, urban gardens, wilderness and restoration. Yeah. Is it a matchup? Are they in conflict? Yeah, so I think the park's movement of understanding of the park has changed and should change, because the colonial idea, as you were asking, was for a facility. It was reminding you of your native land. And here, our cultural growing up is different. Your relationship with the forest or the wilderness is of intimate relationship, livelihoods. Everything is kind of attached to it. So I think the parks have become very sanitized spaces. They are trees or plants are seen as features.
So why you are planting a particular plant is only because it flowers at certain time, which might be only 15 days, and it looks spectacular in those 15 days. Yeah. So it's all about effects that you get in the landscape, and nothing much about habitat or nothing much about the interrelationship. So the sense of beauty has to change. Our community sense of understanding of beauty has to change, where we see relationships, where we see interdependence as something much more interesting for the community to watch, observe, and therefore appreciate. And once you appreciate, you find it beautiful. So it's not just one particular tree which is flowering in Feb and is looking awesome. It's, oh, this tree has so many bird population coming to it, so many animal population coming to it. It does look, the interrelationships that it has with the insect world and so on and so forth. I think those all relationships have to be appreciated, and that's what is slowly emerging. It's not there yet, but it is emerging, and I think this park is in that direction, where it's trying to take people to make them understand the ecology and then therefore appreciate this ecology. So the wilderness that we have around, it has to be appreciated, and I think this is how we can sensitize our urban population and the rural population into the wilds, that this is our heritage that we need to appreciate. Actually, yes, as you were very correctly saying that it's in my experience, more and more young people who wish to travel do not want to really spend time in a structured wild, but want to explore something which is new, which is more wild in the real sense of the word, and that is actually good. Its interpretive value of the wilds is immense. There are competing claims on the land. Now, what it invariably results in any landscape is some degree of biological wealth, a lot of heritage vanishes. So how important is restoration of landscapes and habitat for the future conservation needs? So firstly, I think let's start with what India has signed for. We have committed for 30-30-30, which is 30% of our land into forests, and also a milestone of 25 million hectares that we want to ecologically restore, and this being the decade of restoration under UN is a very significant step to kind of look at the larger canvas that we are, the world is going through really tough times in terms of biodiversity. The WWF report in few years back told us that 50% of invertebrate species, and here only we are talking about limited group, which we have not even studied. Many must have got lost. So 50% of our invertebrates have kind of gone extinct. It's a huge thing. It's a huge thing. We don't know. We have not studied Thar enough. The kind of plant communities that existed, or the kind of faunal community there were, that we perhaps would have missed. Look at the developmental work going in Thar. It is, if we have to look at fog-dominated habitats, we have to go right up to the border. To get to see what it would have been. So we are losing these beautiful habitats, and therefore the need to restore, therefore the need to bring back, and most of them are short-term. The destruction is short-term for the short-term benefit, yes. And it has long-term impacts, because you can't easily bring back. There is no plant material to bring back, so that is not happening, and therefore active restoration has to be undertaken, and the community of plants have to be brought in, and that being the base for the faunal diversity to come in is seminal, very important. And urban centers are becoming more and more important from, because our policies are, unfortunately, our policies are driven sitting in cities. Yes. And therefore, what you touch, like I remember in Mangarbani, in Haryana, when we took the Chief Minister of Haryana to see a forest which is privately owned in terms of the ownership, but a standing
Anogenesis pendula forest, maybe 300 years old. He was shell-shocked. He was like, really? This is what we are talking about? And he gave an order which is like from a buffer zone of 50 meters, he made it into a 500 meter buffer. And that kind of enclosed a larger area for conservation, at least it hasn't got the legal sanctity, but at least somewhere no construction zone has been declared. So therefore these urban centers, a park like this or a park like Aravali Biodiversity Park or a Raujoda Park are very, very important for people to kind of understand what is it that is happening far off, and therefore needs more conservation. And therefore this has come into into our vocabulary now, restoration, rewilding, and why it is important. And more it has to get ingrained into our policies that this is what we need to do. Also to make the international commitment that we have made as a nation, but also what is happening around us. The quality of life is degrading. I often quote Delhi being the capital. Here our water is contaminated, our air is polluted, our food that we get is toxic, and we don't have a quality of life. So where are we going as a society? It needs to be kind of rejigged and worked backwards and kind of take a back seat and look at restoration. I think we need to do restoration. While on the topic of restoration, one thought which has crept in within the development sector in the state is perhaps there is a need to create in the Western Desert more plant micro-reserves. It's still not very structured as a concept, but what we are looking at is one or more species, closed conservation, so that they act as a nucleus for a source of biological material for expansion outward as and when we can conserve them and grow them. So the desert landscape, the desert floral communities, the faunal communities are so sensitive to the slightest change that unless and until we create inviolate areas for their conservation, it's difficult to ensure that they survive. Vijay, the Rui, the interdunal flat, I believe it's extremely important as a conservation resource. Can you expand on this? Yeah, so it's a good question that you have asked. Here at Kishan Bagh, what we are trying to do is, the word Rui, we are celebrating this word, It's a traditional word from western part actually, from Punjab to Rajasthan to Gujarat. This word has been in use in different forms. So Rui is basically jungles of Thar or wilderness of Thar, and it has different plant communities. So we see, depending on the edaphic conditions, we get different kinds of plant communities. So here what we are trying to do, where we are right now is the Rui. Yeah, and this has happened. These are obstruction dunes which are now fossilized over maybe thousands of years, and the plant community that is most happy to the extreme weather conditions. Summers are very hot. Now here the change is that in the monsoon you get also moist, 500 mm to 600 mm rainfall, and the winters are very, very harsh. You can see the frost damage on the plants here. So I think Ruis are important because they have evolved with all these conditions. The plant communities have evolved with all these conditions, and generally it's savanna kind of a feel to it. And the bird populations, diversity, even migrating birds, raptors, lots of raptors, that's what you see in the Ruis, right? So here what we are trying to do is we have kumats, some patches of kumats, salvadoras, and mostly shrubs like your keep, your bui, your pog, your keep, and these are what we are, grasses, lots and lots of grasses. That's what we are celebrating. Now in the dune you'll also get different plant community on the top of the dune. You'll get in the internodal dunes where the soil is more compacted, or there is some sort of water accumulating, and therefore salinity or the soil texture is different. There you get different plants. Yeah, so you will notice that if you go to Thar, you will find in the interdunal areas, you will find almost like forests of care.
Caparis decidua, and it's an awesome, beautiful sight when they are in flower. You know, between the barren dunes, there is suddenly flush of this scarlet, you know, trees having the scarlet color on them. So the interdunal areas are special. They are different depending on, is the water flowing, is the water getting contained there, and so on and so forth. So yeah, so this is what we are trying to recreate here in Kishan Bagh. Yeah, thank you so much. And care, when you said care flowers, I mean, care flowers are so good looking. I mean, peach comes a second best, and care is more peach than peach ever was. That's it's true. Actually a lovely, it's a beautiful, beautiful flower out of these parts. Vijay, we have behind us a portion of the Aravalis, a name that immediately invokes a sense of history, a geological history with the oldest mountain ranges and perhaps the most neglected mountain ranges. Tell me more about the Aravalis, conservation requirements, what that is being done, what that more could be done. So, I mean, that's a big question for me. But my exposure to Aravali is from the work that I have done at Aravali Biodiversity Park. So, where we have restored 380 acres of mined quartzite quarry into the forest communities that you find in the Aravalis, in the northern Aravalis. Not, you know, Aravali is such a big range, yeah, and because of the rainfall, like with the forest communities seen in Udaipur, is very different from what you, from Sariska or even up to Jaipur, you know, it's very different. So I think, yes, I totally agree with you that we have missed on the beauty of Aravali. Firstly, it has, it's, as you said, it's the oldest fold mountain in the world, and it has to be cherished as a heritage, you know. And there is one report by Professor Narpat Singh which says that 50% of the Aravalis in the northern Aravali is already, forest land has been already converted for developmental work, for agriculture and developmental work. So it tells you that, you know, they are very, very neglected. The forests are degrading. In large part, it is kind of colonized by Prosopis juliflora. Not on so much on the high reaches, but in the valleys, everywhere it is Prosopis juliflora which has kind of colonized the whole area. So there is a huge need to restore Aravalis. Firstly, provide legal sanctity to, we know that mining is important, but kind of be strict about mining, you know, so that the illegal mining which is happening in and around the villages and in larger areas, you know, where 1 hectare plot is given but 50 hectares are being mined, and recently when the courts pulled up as to what is, where are those hills, you know. So I think first is to protect. We have to be very, very diligent about it, that we need to protect the Aravalis. This landscape that we are seeing is part of the Aravali system. Absolutely. Without the Aravalis, this landscape wouldn't have happened. Yeah. So we need to protect it, and once we have protected it, we need to restore it. The restoration should be with the native species, the plant communities that exist. You know, you have beautiful Salar forests existing now in the northern Aravalis. You have Anogesis pendula forest, beautiful, the Butia forests, you know, and so on and so forth, grasslands and savanna. All that I think we need to protect and restore. And we see lots of barren hills on the way. Perhaps we need to restore them bit by bit, you know, and get other players, you know. I think there is in today's time, there is a growing kind of agreement, understanding between general masses that we need to restore these hills. And what that restoration would be, I think we have to lead in that. As forest departments, as people who are invested in eco-restoration, we should lead it, kind of guide it into getting a good restoration work done, you know, in terms of plant communities that get restored there. Yeah. So, and there is money.
There is money. I think the forest department and the other departments, they have to open up, get private players to come in and restore. Pool the resources. Pool the resources in restoring, you know. And I have seen beautiful, you know, landscapes which are huge potential to become internationally recognized sites within the Aravallis for people to come and experience that kind of wilderness and that kind of also unfortunately mined, but yet beautiful in its own scarred kind of sentiment. We need to tell a story about why we are doing mining and what are these, you know, beautiful, you know, after a hill, if you have mined a hill and you have left the whole column, it does look beautiful in many ways, and we can tell a story. There's a story in every escape. Absolutely, Yes. absolutely. So I think the way forward is inclusive approach to restoration, get people involved, get communities involved, because they are the big stakeholders in the Aravallis as well, and restore bit by bit, yeah. And there is a win-win proposition for all, for governments, for those who are involved in eco-restoration, and certainly the public at large. In like Aravalli Biodiversity Park has got the recognition as India's first OECM, is it? That's right. That's right. Yeah. So we got this. That's fascinating. I mean, this is as important as a site being declared as a Ramsar site. I mean, it's Absolutely. probably more, because it's a direct contribution to the country's carbon commitments. That's right. That's right. So I think we have this this OECM, which is not legally sanctioned in India yet. But hopefully in the new, there will be a possible of integrating into our laws where we can say that, you know, the lands which are with the community or are not defined as forest or protected forest or reserve forest or a sanctuary or a national park can be biodiversity rich, like large part of Thar, large parts of Aravallis, Yes. can be OECMs, you know, and get some sort of interest of the world community to look into it. Yes. Including our own student community and the research community to come and, you know, play a significant role in conservation of these areas. I understand that with those who are residing in and nearby Delhi, Aravalli Biodiversity Park has turned out to be a very good attraction for experiencing the outdoors, for experiencing the wilds. I mean, what I get to see on social media, that more and more people are traveling to that park, trying to understand, and it's good. I mean, it presents before the public one of the best faces of conservation, actually. Yeah, thank you very much. Yeah, it is becoming a place for the public to see, but also for the researchers. I think for me the biggest kick is that we have got DU, we have got JNU, we have got forest department trainings happening in that park. Fantastic. So JNU, we have 12 hectare plots, and there is vegetation records been taken. There is an amphibian biologist who is looking at amphibians. Wow. So we have got all 8 species of amphibians in a small area like that, and because of the clean water that we get from the rains and those pools. And we have got some researchers working on birds and butterflies there. So I think that's where, you know, the larger masses will get filtered out storytelling. Yes. That this is what happens. This is what happens. You know, we have. Can you believe there is interest in amphibians, frogs and toads? I mean, somewhere in northwest India, a statement: 7-8 species of amphibians in the Aravallis. Yeah. In most parts of the country, and I come from the east of the country, this is a statement that will immediately raise eyebrows and ears. People will start paying attention. It is that interesting. It's fascinating, actually. Yeah, it may sound very, very small number from a person who is coming from Western Ghats or even Himalayas, but it's very significant in our context. Very significant. For our, you know, like in the park, in the Aravalli Biodiversity Park, we have got first record of about 68 species of butterflies. Wow. By 2 counts, only 2 counts. So that number is going to go up. But it may look not a big number, but when you look at the context of the Aravallis and the degraded mine site, then it makes us It makes a lot of sense. Interesting story. It's absolutely fascinating, the sort of biological diversity that an area could host with a little bit of protection and care. Absolutely. And getting the right species in. You know, because people, and that's what we have felt a lot, because people, the whole general tendency is to green, and green is to plant anything anywhere. That's the
That's the kind of general understanding. Yes. And that we have to fine tune into creating habitats, and habitats are special. They have certain plant communities, and that message we have to keep on driving into our horticulture departments, into our forest departments, and even forest departments for that matter, to get this kind of habitat creation. And I'm very happy that I've worked with some of the forest department people in Rajasthan and in Haryana, and I'm very happy with the sensibility that these officers are bringing out and committing themselves. Of course, the tenurial commitment and all of that issues are there, but somewhere I think the awareness is much higher now on restoration, rewilding, and the community of plants to be put together, and then bringing in the faunal. That automatically brings in the faunal community. Yeah, that's the point I try to make when I'm talking to my junior officers, that look at the land, be hyper local in your initiatives, and even the people's participation, the community involvement, which is a major factor in conservation today, that too has to be very local. Absolutely. I mean, nobody could come and do it for us from outside. Absolutely. It's for us to do it very much here. Absolutely. That's such a significant point. Yes, it's difficult, but it's doable. Yeah, I believe it's doable. Yeah, I mean, that's what I think the community participation, I think, is the biggest area for anybody who is into restoration, or whether it is forest department, or horticulture department, or any departments, or NGOs. Community participation into restoration is going to be the most important indicator for restoration in this country. For a successful effort. Yes, absolutely, I agree. Thank you very much for saying that. Thank you. It's been fascinating. It's been wonderful. Yeah. Shall we? Yes, please. Vijay, what I have felt from my travels to different wilderness areas, the experience is complete to a significant extent if the interpretation is good. Kishan Bagh stands out for its interpretation, of course. So how difficult is it to communicate, number one, and how do you see interpretation becoming a calling, not just a hobby but a calling, a profession? Yeah, so I think firstly we'll have to thank Pradeep for doing an incredible job with the designers in doing the interpretation here in the Kishan Bagh Park here. I would like to add that interpretation is very, very important for people to understand what the natural world is, the different exhibits, the interpretive islands tell you a story of, the larger landscape, that people might go into the Thar and learn, and their eyes might get opened to looking into the plants and the animal world and the birds world. I think along with it, it's also the guided walks. The naturalist in our team, Monal Dinkar, incredibly, engaging with the citizen here, talking to the people, making them see, because it also needs a certain training into seeing, the interrelationship between insects and the birds and all different forms of life, plants and the insects and all of that. So that they help in seeing. So I think it is very, very important to interpret, to tell the story. It is a part of restoration, at least at this stage, where the community, we are bringing up the community, the general consensus into restoration. I think it is very important that all this is done. Once it is established, then we can purely focus on restoration, and maybe we'll have much more hands to, you can't interpret the whole of the Aravali's. You can create an island, some small parks here and there for interpretation. Like you can't interpret the whole jungles, but a national park or a sanctuary needs an interpretation so that people can be aware what a good interpretation, that's storytelling, good storytelling, not just putting pictures. Yes, it's a story that is what a person would remember. That's right. We live in the world of images. There's a million images passing us by every day. That's right. So it's very difficult to stay fixated on one image. But on the other hand, that story, the narration, the story, the visuals, they all come together and create a very lasting imprint. A part of the memory, a part of the conscious, which stays, which is the measure of success. That's true. It's been a fine and educative morning
today in Kishan Bagh. We talked not just on this particular island of excellence out here, but on different landscapes out of the subcontinent, the Thar, the Aravalli. Wilderness areas need to be respected. It could be a small wasteland within an urban settlement. It could be a wilderness area away from home. It is our choice not to litter it. It is our choice not to encroach upon it. And it is a choice not to abstract too much water. We respect nature. Nature will keep giving us back. With this, thank you, Vijay. Thank you for explaining it all to us. And thank you, our viewers, for a very patient hearing. Thank you very much. किसान जी, आपका ऑडियो शायद ऑफ है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही है। हेलो यस, हेलो हेलो आ रही हेलो आ रही है आपकी आवाज। जी मैम, मैं ये अर्ज कर रहा था कि फिल्म बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत हुई, लोगों ने देखा भी, और जो हम ये चाह रहे थे कि लोग इसको देखें और इसके बारे में जुड़े, लोग जिससे जुटे, कम्युनिटी इसके जुड़े, नए लोग इसमें जुड़े। तो जो कमेंट्स देख के लगता है कि बहुत अच्छे से लोग जुड़ने लगे हैं। 2-3 सजेशन आए थे जो आगे के लिए हैं कि पहला तो ये है कि चंबल के प्रोजेक्ट को भी लेना चाहिए, दूसरा ये कि प्राइवेट जो कॉर्पोरेशन हैं उनको भी आना चाहिए। वो आगे होगा या नहीं होगा बात की बात है, लेकिन कम से कम लोगों के दिमाग को हिलाया इसने। इस फिल्म को तैयार करने में जो विजय दसमानिया जी ने और साथ में अरिजीत जी ने जो समय दिया, उन दोनों का हम बहुत आभार प्रकट करते हैं। नवीन त्रिपाठी जी जो जिन्होंने इस फिल्म को एक्चुअल तैयार किया, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ पर्यावरण विभाग का धन्यवाद जिन्होंने इसको फंडिंग की है। और आम जनता को ये जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो पार्क जो स्टेब्लिश किया गया है, जिसको डेवलप किया गया है, जिसे हम कहते हैं रिवाइल्डिंग की गई है, ये विद्याधर नगर में जो स्वर्ण जयंती पार्क है वहां से इसका अप्रोच है, कोई भी जा सकता है। और इस जो ये दोनों की बातचीत से पता ये लगा कि दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है कि एक तो ये जो हमारी पारिस्थितिकी है, इकोलॉजी है, ये हमारा अपने आप में एक हेरिटेज है, इसको बचाए रखना भी जरूरी है। उसके लिए भी ऐसे पार्क बनने, ऐसी एफर्ट होना, ऐसे एक्सपेरिमेंट किया जाना बहुत जरूरी है। दूसरा, जो पार्क हम पाते हैं आजकल की कॉलोनीज में, हमारी आधुनिक कॉलोनी में, बेसिकली देखा जाए तो कॉलोनियल हेरिटेज माना जाएगा। हमारा उसमें अपना योगदान नहीं, ये जो हम कर रहे हैं ये हमारा अपना योगदान है।
मैम आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? थैंक यू वेरी मच। और मैं बस ये कंक्लूड करूंगी कि सभी ने एंजॉय किया होगा, और जितना हमने एंजॉय किया है इस पूरे फिल्म को बनाने में और कंप्लीट करने में और एग्जीक्यूट करने में, उतना ही मजा सभी को आया होगा। और इससे सभी ने जितने जुड़े हैं कमेंट से दिख रहा है, और ये एक एमेच्योर एफर्ट था, इन हाउस हमने बनाया, तो उसके लिए इतना अप्रिसिएशन आया, उसके लिए बहुत बहुत एक चीज और है कि आज हमारे इस प्रोग्राम में हमारे जो राष्ट्रीय डेल्फिक काउंसिल के राष्ट्रीय जो प्रेसिडेंट है रमेश प्रसन्न साहब, वो भी जुड़े हैं, उनका भी स्वागत। और अब समय हो गया विदा लेने का। हम सभी से ये निवेदन करते हैं कि इसका लिंक यूट्यूब पे अवेलेबल है, फेसबुक पे अवेलेबल है, इसको जनता तक पहुंचाए, जो कि इतना पैसा, इतना एफर्ट, और सबसे बड़ी बात ये कि इतना कंसेप्चुअल जो लोगों ने दिमाग लगाया है, मेहनत करी है, वो लोगों तक पहुंचना चाहिए। इसके लिए आपसे निवेदन है कि इसको शेयर करें, ताकि हमारे इकोलॉजी, हमारे पर्यावरण, हमारे एनवायरनमेंट के लिए हम कुछ इतना सा योगदान तो कर सकें कि हम दूसरों तक अपनी बात पहुंचा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैम श्रेया मैम का बहुत धन्यवाद कि आपके प्रयासों से ये इतना अच्छा फिल्म बन पाया। विजय धस्माना जी का, हमारे त्रिपाठी जी का, और जितने सब लोग इसमें जुड़े हैं, अधिकारी पर्यावरण विभाग के, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हम डेल्फिक काउंसिल की तरफ से 26 तारीख को पुनः किसी न किसी प्रोग्राम को लेके हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।